Please do not forget to subscribe the channel and please press the bell icon. Good morning, students. So let's proceed with section formula. Second variety of questions. In the last class we have done the questions of type 1. That was just based on finding the coordinates of the point P when the P, that is point of division, when the coordinates of A and B are given and the ratio is also given to you. Now today we'll be discussing the questions of type 2. In type 2 we'll be discussing to find the ratio. To find the ratio. और बच्चों रेशियो फाइंड करने के लिए तीन वैरायटी के क्वेश्चंस यहां पर मिलेंगे. ए, B, C. In type A, we'll be dealing with those questions in which coordinates of A and B are given. And coordinates of P are also given. And we have to find out the ratio. In type B to B, we'll be considering here again coordinates of A and B are given. And one coordinate of P is given. That is either X coordinate is given or Y coordinate is given. You also have to find other coordinate. Of P. In 2C we'll be dealing about here coordinates of A and B are given. And a line, an equation of line is given. An equation of line which divides AB. Is given. Again we have to find out the ratio. Also find coordinates of P, which is the point of division. So to solve all these three variety of questions, we'll start always the solution B, जहां भी आपको ratio find करना है. We'll be taking, let the ratio be k:1. बच्चों k:1 हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहां पर देखिए आप A और B के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है. P के कोऑर्डिनेट्स आइदर गिवन है और वन कोऑर्डिनेट इज गिवन. यहां पर रेशियो होता है हमारे पास जनरली m1:m2. रेशियो वी जनरली टेक इट एज m1:m2. तो यहां पर हमारे पास बच्चों दो वेरिएबल्स होंगे, लेकिन जब हम उसको k:1 लेते हैं तो m2 की वैल्यू हमने 1 ले ली. दैट मीन्स देयर इज ओनली वन वेरिएबल नाउ k. So with the help of this we can easily find out the value of k
and whatever is the value of k, that will be actually the ratio. For example, यदि मान लीजिए आपको मिला k is equal to 2, तो answer will be ratio is 2:1. If you get k is equal to 3:2, so the ratio will be 3:2. तो बच्चों इसीलिए हम k is equal to k assume करेंगे. Let the ratio be k:1. Okay. Now let's take some examples. So let's take one example based on type 2a where coordinates of a and b are given. So the question is, in what ratio does the point 1 comma minus 7 upon 2, 1 comma minus 7 upon 2, so this is the point here P whose coordinates are given as 1 comma minus 7 upon 2, divides the join of minus 2 comma minus 4, minus 2 comma minus 4 and 2 comma minus 10 upon 3. 2 comma minus 10 upon 3. See, this is point A. This one is point B. So coordinates of A and B are given and coordinates of P are also given. Let the ratio be k:1. See, this is here x1, y1. This one will be xy and this is your x2, y2. So students, you can apply x और y दोनों मालूम है तो किसी भी एक कोऑर्डिनेट के लिए आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. लेट्स अप्लाई फॉर x. दोनों से आपको सेम आंसर मिलेगा. वी हैव x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. दोनों से सॉल्व करते हैं. दूसरा y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. अब x की वैल्यू रखिए बच्चों, यहां पर आ गई 1 इज इक्वल टू m1 x2 k इंटू 2 2k 1 इंटू minus 2 upon k plus 1. So here we get k plus 1 is equal to 2k minus 2 or minus k is equal to minus 3. Therefore k is equal to 3. So the ratio is 3:1 and this is your answer. Let's check whether we get the same answer for y or not. Y is minus 7 upon 2 equal to k into minus 10 upon 3 minus 10 upon 3k plus 1 into minus 4 upon k plus 1. पहले यहां पे एलसीएम लेते हैं बच्चों. 3 एलसीएम minus 10k minus 12 upon 3k plus 3. Now cross multiply. Minus 7k into 3k minus 21k minus 7 into 3 minus 21. 2 into minus 10k minus 20k 2 into minus 12 minus 24. minus 20k इधर ट्रांसपोज किया minus k is equal to minus 3. Therefore k is equal to 3. So the answer is ratio is equal to 3:1. So this is the question of type A. When A and B are given and the coordinates of P are also given, we have to find out the ratio. Okay students, type 2B. 2B है coordinates of A and B are given
and one coordinate of P is given, you have to find out the other coordinate of the point P. So in this question, you can see these are the coordinates of the point P. ये हो गया आपका A, B. A के कोऑर्डिनेट्स है हमारे -5, -4. B के कोऑर्डिनेट्स है हमारे -2, 3. और बीच में पॉइंट P दिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -3, P. You have to find out ratio. तो रेशियो फाइंड करने के लिए लेट द रेशियो बी k:1 and also find the value of p. That means you have to find out the other coordinate also. So students, while solving this question, you need to be careful. यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा बच्चों कि जब आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो नोन कोऑर्डिनेट होता है उसके लिए आपको पहले अप्लाई करना है. जैसे यहाँ पे x की वैल्यू नोन है, दिस इज योर x1, दिस इज योर y1, ये है आपका xy एंड दिस इज योर x2, y2. आपको यहाँ पर x की वैल्यू मालूम है तो हम पहले x के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे. लाइक दिस विल हैव x इज इक्वल टू m1 x2, तो k इंटू -2k प्लस 1 इंटू -5 upon m1 plus m2, that is k plus 1. So here we have, and this is equal to x की वैल्यू है -3, so this is equal to -3. Now let's cross multiply and see. -2k minus 5 equal to -3k -3. -3k द ट्रांसपोज होगा तो यहाँ पे हो जाएगा +3k -2k, दैट इज k. -5 द ट्रांसपोज हुआ तो +5, 5 - 3 दैट इज 2. सो वी गॉट k इज इक्वल टू 2. k की वैल्यू आ गई बच्चों 2. इसका मतलब रेशियो आपके पास आ गया 2:1. अब हम 2:1 रेशियो लेकर के सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तो विल गेट द वैल्यू ऑफ p. सो y is equal to, that means p is equal to m1 k, that is 2, this is m1 now and this is m2. m1 is 2 into 3 y2 plus m2 1 into y1 minus 4 upon m1 plus m2. 6 minus 4, 2 upon 3. So the answer is, ratio is 2:1 and p is equal to 2 upon 3. This is your final answer, students. Right? Okay students, so according to this question now, this is question of type 2C, where we are given the coordinates of A and B. ये दिया हुआ है बच्चों, कुछ फिगर ऐसा बनाएंगे. A point 3,4, B point 7,8, and a line is given whose equation is 2x plus 3y is equal to 30. बच्चों यहाँ पे आपको एग्जैक्ट फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे हम एक रफ फिगर बनाएंगे. 2x plus 3y is equal to 30 and this is the point P. We have to find out the ratio first. यहाँ पे लिखा है point P, the ratio find करना है और इस point के coordinates निकालना. So here let the coordinates of point P be x, y, और चूंकि ratio find करना था बच्चों तो let the ratio be k:1. Let the ratio be k:1. This is the solution, starting of the solution. Right? Now in this question, what we need to do?
बोथ कोऑर्डिनेट्स आर अननोन, दोनों ही कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं मालूम है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू k के टर्म्स में निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके। तो हम लगाते हैं x इज इक्वल टू m1 x2 k इंटू 7k प्लस m2 x1 1 इंटू 3 that is 3 upon k plus 1 and y is equal to m1 y2 k into 8 8k plus m2 y1 1 into 4 4 upon k plus 1. Now x and y are the coordinates of the point P. Now P lies on AB. Now when we say any point lies on the given line and P lies on the line, P lies on the line 2x plus 3y equal to 30. Any point which lies on the line satisfies the given equation. और सेटिस्फाई करने का मतलब होता है बच्चों x और y की वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना है। सो विल पुट 2 x की वैल्यू 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, 3 y की वैल्यू 8k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1 equal to 30. Now let's simplify this. Here we get 2 into 7k 14k plus 2 into 3 6 plus 3 into 8k 24k 3 into 4 12 upon k plus 1 equal to 30. So here we get 38k plus 18 equal to 30k plus 30. अब हम 30k को इधर ट्रांसपोज कर लें तो हमें मिलेगा 8k equal to 30 minus 18 12. Therefore k is equal to 12 upon 8. 4 से कैंसिल करें तो 3 upon 2. बच्चों k की वैल्यू आ गई 3 upon 2. That means the ratio is 3:2. The ratio is 3:2. We have obtained k is equal to 3 upon 2. That means the ratio is 3:2. अब चाहे तो एक बार फिर से रफ फिगर बना ले बच्चों। ये हो गया पॉइंट ए बी, ये था आपका पॉइंट पी। रेशियो आपके पास आ गया 3:2। 3:2 ए के कोऑर्डिनेट्स है 3,4, बी के कोऑर्डिनेट्स है 7,8। अब आपको पी के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। दो तरीके हमारे पास। एक तरीका तो यह है कि k की वैल्यू हम यहां पे पुट कर दें और सॉल्व कर लें। विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। दूसरा मेथड ये है कि हम यहां पर इस तरीके से फिगर बना करके और फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगा दें। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p बी x, y। तो x और y की वैल्यू निकालना है आपको। सो वी गेट x इज इक्वल टू m1 x2 3 into 7 plus m2 x1 2 into 3 upon m1 plus m2 3 plus 2 21 plus 6 27 upon 5. Y is equal to m1 y2 3 into 8 plus m2 y1 2 into 4
upon 3 plus 2, 24 plus 8, 32 upon 5. So now the answer is coordinates of point of division are coordinates of point of division are P पॉइंट नाम दिया था 27/5 कॉमा 32/5 और इससे पहले रेशियो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था 3:2. Right? So this way you can find out the ratio as well as the point of division. Okay? So the question is find the ratio in which the line segment joining A and B is divided by x axis. अब जो यहां पर लाइन दी है डिवाइड करने वाली वो आपको x axis दी है, तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा बच्चों. ये आपकी x axis हो गई x x डैश जो कि डिवाइड कर रही है किस लाइन को डिवाइड कर रही है 5,6. ए पॉइंट ये है आपका 5,6 और दूसरा पॉइंट है यहां पर 2,-3. दिस इज पॉइंट बी. बच्चों ये ध्यान रखिएगा हमेशा फर्स्ट पॉइंट हमेशा यहां पर x1 y1 होता है. सो दिस विल बी टेकन एज x1 y1, द अदर वन विल बी टेकन एज x2 y2. And here this point P lies on x axis. तो बच्चों इसके कोऑर्डिनेट्स हम कंसिडर करेंगे x, 0. P lies on x axis, so we'll take the coordinates of point P as x, 0 and let the ratio be k:1. k:1. AP upon PB will be k:1. Now let's apply the formula. अब देखिए यहां पर हमारे पास y कोऑर्डिनेट मालूम है, इसलिए हम पहले y कोऑर्डिनेट के लिए सेक्शन फार्मूला लगाएंगे. सो y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2. बच्चों y की वैल्यू 0 है क्योंकि x एक्सिस पे पॉइंट था. 0 इज इक्वल टू ये है m1, दिस इज m1 एंड दिस इज m2. तो m1y2 तो k इंटू -3k प्लस 1 इंटू 6 प्लस 6 अपॉन k प्लस 1. नाउ स्टूडेंट्स देयर इज अ कॉमन एरर हियर. जब यहां पे इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चे जनरली ऐसा लिख देते हैं k प्लस 1 इज इक्वल टू -3k प्लस 6. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. गलत स्टेटमेंट है बच्चों ये. दिस इज नॉट टू बी रिटन. इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि जब हमने यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और 0 से मल्टीप्लाई होगा k प्लस 1 तो वो 0 हो जाएगा. सो हियर वी गेट 0 इज इक्वल टू -3k प्लस 6. दैट मीन्स 3k इज इक्वल टू 6 और k इज इक्वल टू 2:1. सो द आंसर रेशियो इज 2:1. रेशियो मिल गया बच्चों आपको 2:1. अब आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो x की वैल्यू निकालेंगे. x के लिए फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगाइए. x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2. तो यहां पर अब m1 की वैल्यू हो गई 2 इंटू 5, 2 इंटू 5. m2 की वैल्यू हो गई 1 इंटू 2 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू 2 m1x2 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 अपॉन 2 प्लस 1 4 प्लस 5 9 upon 3 which is equal to 3. Therefore the coordinates of point of division are x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0. So the answer is 3,0 is the point of division and the ratio is 2:1. Ratio is 2:1. Here ratio is 2:1.
पॉइंट ऑफ डिवीजन इज 3,0. बच्चों यहाँ पे डिवीजन बाय एक्स एक्सिस हो सकता है. 2C में 3 पार्ट्स होंगे, डिवीजन बाय एक्स एक्सिस, डिवीजन बाय वाई एक्सिस और डिवीजन बाय लाइन. तो डिवीजन बाय लाइन का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया. दिस इज डिवीजन बाय एक्स एक्सिस and next question we'll be taking that is division by y axis, and then we'll be taking the point of trisection and the division of a line segment into 4 equal parts. Okay, okay students, one more question based on same type 2C. Find the ratio in which y axis divides the join of -4,7 and 3,0. Also find coordinates of point of division. So in this -4,7, suppose this is the line here, this is -4,7 and the other one is 3,0 divided by y axis. The line will be like this, sorry, -4,7, -4,7, this is the point 3,0 divided by y axis. तो divided by y axis, तो y axis हमने बना लिया बच्चों यहाँ पर. This is your y axis, y dash. This is the point A, the other one will be the point B, and this is the point P. Now let's assume that the ratio be k is to 1. Let the ratio be k is to 1. So here when we have assumed, आपको p के coordinates भी निकालना है बच्चों. Divided by y axis, तो यहाँ पर x coordinate 0 होगा. The coordinates of point P will be 0, y. अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू मालूम है, तो हम सेक्शन फार्मूला लगाते हैं. x इज इक्वल टू m1x2, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2. x की वैल्यू 0 है, तो 0 इज इक्वल टू k इंटू 3k प्लस 1 इंटू -4 upon k plus 1. So here we get 3k minus 4 is equal to 0. Therefore k is equal to 4 upon 3. So the ratio is 4:3. The ratio is 4:3. Now we have to find out the coordinates of the point P. तो इसके लिए आपको y फाइंड करना है. रेशियो हमने ऑलरेडी निकाल लिया बच्चों, 4:3 हो गया रेशियो. तो यहां पर अब सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए. y विल बी इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन 4 प्लस 3, which is 21 upon 7, that is 3. Therefore the coordinates of P are 0, 3. This is point of division. Point of division. Okay students, furthermore, now let's see how to find out the coordinates of points of trisection. बच्चों ट्राइसेक्शन का मतलब होता है, देखिए बाइसेक्शन मतलब डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और ट्राइसेक्शन मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. तो जब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है बच्चों, तो आपके पास यहां पर 2 पॉइंट्स होना चाहिए इस तरीके से. This is point P and the other one is point Q.
So we have to find out the coordinates of P and Q. P और Q के coordinates find करना है. Now here as we have divided it into three equal parts, means these three parts are equal. So when we take the ratio now, अब section formula apply करेंगे. To find out the coordinates of point P, the ratio will be taken as AP upon PB. AP upon PB and the ratio is 2:1. तो बच्चों 2:1 रेशियो अप्लाई करके आपको सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है. ठीक है. देन फॉर दिस वन, फॉर द अदर पॉइंट Q पॉइंट के लिए, now the ratio will be taken as AQ upon QB. AQ upon QB. अब इधर दो पार्ट है, इधर एक पार्ट है. So the ratio will be taken as for P the ratio will be taken as 1:2, and for Q the ratio will be taken as 2:1. We have AP is to PB, this is one part. AP is to PB, this is one part, and this is two parts. So the AP is to PB will be 1:2, and AQ is to QB, the ratio is 2:1. Right? For example, if the coordinates of point A and B, let's take an example here. So if the coordinates of A and B are, A के coordinates suppose दिए हुए हैं 1,2 और B के coordinates दिए हैं suppose 5,7, and you have to find out the coordinates of points of trisection. The points of trisection P and Q, this is A, this is B. P और Q के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना है बच्चों. तो यहाँ पर देखिएगा P और Q. तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए द रेशियो दैट वी हैव टू कंसिडर, P के कोऑर्डिनेट्स के लिए रेशियो लेंगे 1:2. Q के कोऑर्डिनेट्स के लिए रेशियो लेंगे 2:1. लेट्स अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला. सो हियर वी गेट x is equal to m1 x2 1 into 5, that is 5, plus m2 x1 2 into 1, that is 2, upon 1 plus 2, that is 3. So x is 7 upon 3, and y is equal to m1 y2 1 into 7 7, plus m2 y1 2 into 2 4 upon 3, that is 11 by 3. So the coordinates of P are 7 upon 3, 11 upon 3. Now let's find out the coordinates of Q. तो Q के coordinates find करने के लिए बच्चों रेशियो लेना है आपको 2:1. तो x is equal to m1 x2 2 into 5, that is 10, plus m2 x1 1 into 1, this is 1, upon 2 plus 1 3, so that is 11 upon 3, and y is equal to m1 y2 2 into 7 14, plus m2 y1 1 into 2, this is 2, upon 2 plus 1, this is 3, 14 plus 2 16 upon 3. So the coordinates of Q are 11 upon 3, 16 upon 3. These are the coordinates of Q. So the points of trisection are 7 by 3, 11 by 3, and 11 by 3, 16 by 3. So this way you can find out the coordinates of points of trisection. Okay students, the last topic, that is subtopic here. Now divide into 4 equal parts बच्चों. A और B के coordinates given है. Divide into 4 equal parts. तो बच्चों 4 equal parts में divide करना है तो 3 points होंगे यहाँ पर. This is P, the other one is Q, and the third one is R. P, Q, and R.
now you see the ratio. सेक्शन फॉर्मूला ही अप्लाई करना है बच्चों. तो P के लिए जब रेशियो लेंगे तो ये होगा आपका AP अपॉन PB, AP अपॉन PB. और इधर 1 पार्ट से इधर कितने 1 2 3 पार्ट से. So the ratio will be taken as 1:3. Then for the point Q, now the ratio will be AQ is to QB. AQ is to QB. So it is 2 पार्ट इधर है 2 पार्ट इधर है 2:2, which can also be considered as 1:1. This is midpoint of AB. midpoint का फॉर्मूला होता है x1 plus x2 upon 2. तो midpoint फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं. ओके. Then the third one is R. R के कोऑर्डिनेट्स के लिए बच्चों रेशियो होगा AR is to RB. AR is to RB. So AR मतलब 1 2 3 पार्ट्स है और RB is only 1 part, so the ratio will be considered as 3:1. Right? So this way you have to apply the section formula first by taking the ratio as 1:3, क्योंकि A और B के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे. Let's take an example. Suppose A और B के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए मान लीजिए this is suppose 1, 2 and here it is 5, और 6,11. 6,11. तो हम फटाफट P के कोऑर्डिनेट्स निकाल ले बच्चों. रेशियो 1:3 लेना है आपको. रेशियो 1:3. I am writing the coordinates directly here. You can apply the section formula. 1 into 6 6 plus 3 into 1 3. 6 plus 3 9 upon 4. Another one 1 into 11. 11 plus 3 into 2 6. 11 plus 6 17 upon 3 plus 1 4. ये हो गए आपके P के कोऑर्डिनेट्स. These are coordinates of P. अब हम Q के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करते हैं. Q the ratio is 1:1. 1:1. 1 into 6 plus 1 into 1. So 6 plus 1 means 7 upon 1 plus 1, that is 2. और ऐसे भी देखिए x1 plus x2 upon 2. 1 plus 6 7 upon 2. और दूसरा आएगा 2 plus 11 13 upon 2. This way we get the coordinates of Q. And for the coordinates of R के कोऑर्डिनेट्स के लिए फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं. 3 into 6 18 plus 1 into 1 19. 18 plus 1 19 upon 3 plus 1, that is 4. And y coordinate will be 3 into 11 33 plus 1 into 2 2. 33 plus 2 is 35. So 35 upon 3 plus 1 4. So these are the 3 points which divides the line segment given joining A and B into 4 equal parts. तो बच्चों ये जो 4 equal parts का कॉन्सेप्ट है आप इसको मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं. हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो यहाँ पर आपका Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए जब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो डायरेक्ट आपको Q के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे. 1 plus 6 7 upon 2. 2 plus 11 13 upon 2. फिर हम AQ का मिड पॉइंट निकालते हैं तो हमें P के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे और QB का मिड पॉइंट निकालेंगे तो R के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे. दैट वे आल्सो यू कैन डू इट. ओके. सो वॉच द वीडियो केयरफुली. क्लिक ऑन द बेल आइकन. Thank you very much. Solve the worksheet given at the end of the video, and for any doubt you can contact on the given number. Thank you. Stay home, stay safe, have a nice day. Okay students, so let's discuss the question of type 2C. 2C question discuss करते हैं. Question is find the ratio in which the line 2x plus 3y minus 30 is equal to 0. This is the equation of given line. Divides the join of 3, 4 and 7, 8. Also find the coordinates of the point of division. Now we'll be drawing a rough figure here. This is not an exact figure, rough figure है बच्चों. Coordinates of A 3, 4,
coordinates of B 7 comma 8, and this is the line 2x plus 3y is equal to 30. Now we have to find out the ratio. So as we have done and discussed earlier also, that let the ratio be k is to 1. Ratio हमने assume कर लिया बच्चों k is to 1, और p के coordinates हमने मान लिए x, y. Now we'll apply the section formula. First for x, then for y, and write the value of x and y in terms of k. So here x is equal to m1 x2, that is k into 7, that is 7k, plus m2 x1, 1 into 3, that is 3, upon m1 plus m2. So this is 7k, x is equal to 7k plus 3, 7k plus 3 upon k plus 1. Similarly, y is equal to m1 y2, that is 8k, plus m2 y1, 1 into 4, that is 4, upon m1 plus m2. So y is equal to 8k plus 4 upon k plus 1. Now we know that the p point lies on the given line, and we have discussed earlier that when a point P, any point lies on the line, that means it satisfies the values of x and y, satisfies the given equation. तो यहाँ पे बच्चों ये जो x और y की वैल्यूज हमने निकाली थी, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, ये x और y की वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करना है. ओके, सो हियर वी गेट 2 into 7k plus 3 upon k plus 1 plus 3 into 8k plus 4 upon k plus 1 equal to 30. Now we'll solve this equation. So here we get 2 into 7k, 14k, 2 into 3, 6, plus 3 into 8k, 24k, plus 3 into 4, 12, whole upon k plus 1, this is the same denominator, so k plus 1 is the LCM here, equal to 30. Now 14k plus 24k, this is 38k, 6 plus 12, this is 18, and k plus 1 multiplied to this side, we get 30k plus 30. Now 30k transposed to this side, इसको इधर लेकर आ गए, तो 38k minus 30k will get here 8k. 18 transposed to other side, so we get 30 minus 18, which is equal to 12. So therefore k is equal to 12 by 8, that is 3 is to 2, 3 by 2. So the ratio is 3 is to 2. This is the ratio. Now what we do, we'll draw a rough figure once again. तो यहाँ पे a के coordinates लिखें बच्चों 3,4, b के coordinates लिखें 7,8, और ये रेशियो हमने लिखा है 3:2, मतलब ये हो गया आपका m1 m2. Now again we apply the section formula to get the coordinates of the point P. So x is equal to 3 into 7, 21, plus 2 into 3, 6, 21 plus 6, 27, upon 3 plus 2, that is 5, which is equal to 27 upon 5. Similarly, y is equal to 3 into 8, 3 into 8, 24 plus 2 into 4, 8, 24 plus 8, 32 upon 5. So these are the coordinates of the point P, which is the point of division. Okay.